is resolved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder. Hello friends, I, Shreyans Kothari, welcome you all to the YouTube channel of S. Chand Academy. In this channel, we usually provide you video solutions of the published books so that these videos complement the book. You just need to scan the QR code and yes, you are there. We are trying to make that old saying true, किताबें भी बोलती हैं. Generally, we follow a simple pattern to all these videos. We just make you understand the simple concept or the basic concept behind the topic. And then we try to solve some of the questions from the book. This video can be seen standalone also because this video in itself is complete to clear the doubts. Talking about this book, man, this is the Quantitative Aptitude by S. Chand. One of the best books you can find for this particular section in the country. Why so? Because I guess this is the most comprehensive book available as it is regularly updated. The new questions are added and you name an exam, you will find this book appropriate. Why so? It is for bank, SSC, railways, MBAs, hotel management, sub-inspectors, UPSC, you name it and it is there. So for quantitative aptitude, even for the campus recruitments, students follow this book. And I guess this is the most comprehensive book of all. And I guess the oldest one. Why I am saying oldest one? Oldest one with the updated one. So you don't have to go anywhere else. Just stick to this book. So without wasting time, let's move to the chapter. So here we go with the chapter number 15 here. 15 the chapter is chain rule. Chain rule kya hai? See, chain rule is like, what is chain? Chain is a interconnected something which has all the small कड़ियां, right? Frets कहते हैं. So बहुत सारी कड़ियां हैं जिनको जोड़ के एक चेन बनाते हैं और ऐसा होता है चेन में एक चीज पर इंपैक्ट डालो तो वो धीरे धीरे सब पे इंपैक्ट डालता है. Similar way में in this chain rule we have things which are interconnected. So if we have impact on one thing, it will impact on second thing. अब वो second thing पे directly impact डालेगा, indirectly डालेगा, inversely डालेगा. कुछ न कुछ तो ऐसा होगा जो हमें समझना है. So let's start with the theory part and we'll move to the questions then. Start with the theory part. See, first part is directly proportional. Two quantities are said to be directly proportional if on the increase or decrease of the one, the other increases or decreases to the same extent. Yes, कोई चीज directly proportion है. That means अगर किसी एक क्वांटिटी पे इंपैक्ट पड़ता है वो इंक्रीज होती है, दैट मीन्स दूसरी वाली भी इंक्रीज होती है. अगर वो डिक्रीज होती है दूसरी भी डिक्रीज हो जाती है. सो दोनों पे मतलब एक पे इंपैक्ट करने से दूसरी पे सिमिलर प्रोडक्ट सिमिलर टाइप का इंपैक्ट पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, देन दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. एग्जाम्पल दे रखा है दोस्तों, कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आर्टिकल्स. सिंपल बात है बॉस, ज्यादा आर्टिकल खरीदोगे ज्यादा पैसे लगेंगे. मान लो एक चीज आती है 5 रुपीज की, सो इफ यू वांट 10 वी विल हैव टू गिव 50 रुपीज. वांट 100 यू हैव टू गिव 500 रुपीज. सो यू इंक्रीज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यू हैव टू इंक्रीज द प्राइस. सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं इसे. वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मेन वर्किंग ऑन इट. अगर एक कार्य को लोग कर रहे हैं and if you increase the number of people, लोग बढ़ा दो, काम फटाफट हो जाएगा, जल्दी काम ज्यादा हो जाएगा. और लोग बढ़ा दो और काम ज्यादा हो जाएगा. सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है. जितने ज्यादा लोग लगाओगे उतने ज्यादा काम करेंगे. दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थिंग. सो सिमिलर वे में आपको समझना है कि बॉस कोई ऐसी क्वांटिटी मतलब दो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें एक में पॉजिटिव इंपैक्ट डालने से दूसरे में पॉजिटिव इंपैक्ट डलता है. अगर एक को डिक्रीज कर लेते हैं दूसरा अपने आप डिक्रीज हो जाता है. देन देयर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल जिसको मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह रहा था, ऑपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. लेट्स सी व्हाट डज इट से. द बुक सेज two quantities are said to be indirectly proportional if on the increase of the first the other decreases to the same extent and vice versa. Vice versa का मतलब ऐसा ही. That means अगर आप एक क्वांटिटी पर
चीज को कम करते हो दूसरी बढ़ जाती है, अगर आप बढ़ा देते हो कम हो जाती है। बहुत सिंपल एग्जांपल बताऊं, आपका सप्लाई एंड कॉस्ट। सप्लाई बहुत ज्यादा है, कॉस्ट कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा, मतलब प्राइस बढ़ जाएगा। ये तो एक बेसिक इकोनॉमिक एग्जांपल दिया मैंने आपको। यहां पे देखते हैं क्या एग्जांपल है। द टाइम टेकन बाय कार इन कवरिंग सर्टेन डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द कार। स्पीड बढ़ाओगे डिस्टेंस कम, मतलब डिस्टेंस के लिए जो टाइम है वो कम लग जाएगा। स्पीड और बढ़ाओगे टाइम और कम लग जाएगा। स्पीड धीमे कर दोगे टाइम बढ़ जाएगा। सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टाइम एंड स्पीड। Second is time taken to finish a work is inversely proportional to the number of the person. Yes. एक काम करने के लिए 4 व्यक्ति लगाए, हो सकता है 5 दिन लग जाए। आपने 10 व्यक्ति लगा दिए, दिन कम हो जाएंगे। सो जितने ज्यादा लोग लगाओगे उतने कम दिन में काम होगा, लोग कम होंगे दिन ज्यादा लग जाएंगे। In solving questions by chain rule, we compare every item with the term to be found out. हमें हर चीज पे कंपैरिजन करना है जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस करें। सो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। Let's bring the questions. So question number 2, what does it say? If 35 men can finish a piece of work in 8 days, then the number of men who can do the same work in 10 days. First thing first, let me ask you, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? अगर हम 35 मैन लगा रहे हैं, वर्क इज इन 8 डेज, अगर 10 डेज का काम करना है तो लोगों को कम करना पड़ेगा। Why? Because इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेज एंड नंबर ऑफ वर्कर्स। लोग ज्यादा लगाओगे काम फटाफट हो जाएगा, यानी दिन कम लग जाएंगे। अगर लोग कम लगाओगे दिन ज्यादा लग जाएंगे। सो एक चीज मैं लिखता हूं, 35 men, that means 8 days. So we have 10 days. And we want X men. This is the simplest way you can put. Now, if they are inversely proportion, just write X wala part. 35 ratio X is equal to, just reverse the order, 10 is to 8. Why 10 is to 8 and not 8 is to 10? Because they are inversely proportion. यहां 35 से X जाएंगे तो यहां 10 से 8 जाएंगे. So just do the cross calculation. Cross calculation मतलब cross multiplication. 4 is always multiplied to the 1 and the second is multiplied to third. So we get 10x is equal to 35 into 8. So x is equal to 35 into 8 divided by 10. So we get 2 here, we get 7 here, we get 4 here, so we get 28 here. So it will take 28 men to complete this work in 10 days. Is there any option like 28? Yes, it is. So what we are waiting for? Simple thing. I will let you do all the questions very easily. I'll try to make you understand very easily. आप बस मेरे साथ चलते जाइए. हमने कुछ भी नहीं किया, हमने एक तरीका अपनाया एंड सिमिलर तरीके से हम सारे क्वेश्चन करेंगे. 35 मैन है तो 8 डेज लग रहे हैं, कितने मैन होंगे तो 10 डेज लगेंगे. पहला काम यू नीड टू डू इज 35 is to x. सबसे पहले तो यही लिख दो अपॉन में. अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो आप इसको 8 is to 10 लिखो. अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो 10 is to 8 लिखो. एक और क्वेश्चन करते हैं. 40 men working for 12 hours a day can complete a work in 8 days. Then how many men work for 4 days a day, 4 hours a day and can complete the same in 16 days? First thing first, सबसे पहले हमें निकालने हैं 40 men. So हम एक काम करते हैं, 40 is to x तो लिख ही देते हैं, राइट? अभी हमें बस इतना देखना है कि बॉस कौन सी चीज इनवर्सली और कौन सी डायरेक्टली है. 40 और x की बात करते हैं. सो 40x यानी 40 मैन 12 आवर्स अ डे. जस्ट आस्किंग कि अगर मैं लोग बढ़ा दूंगा तो आवर कम लगेंगे, लोग कम हो जाएंगे तो आवर ज्यादा लग जाएंगे. यही होगा ना. सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शन. सो यहां अगर मैंने 40x लिखा है तो 12 पीछे आएगा, 4 आगे आएगा. ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 40 के लिए 12 लग रहे हैं,
तो x के लिए 4 यानी उल्टा लिखना पड़ेगा। सिमिलर वे में डेज में भी ऐसा ही होगा, 8 पीछे आएगा एंड 16 इधर आएगा, यही तो हमें करना है। Okay, so as I told you, we need to multiply this left portion with the rightmost portion. So we do it like that, 4 into 16 into x, and we put it like 12 into 8 into 40. फर्स्ट वाले पोर्शन को फोर्थ वाले पोर्शन से मल्टीप्लाई करो, सेकेंड वाले को थर्ड से मल्टीप्लाई करो, एंड देन सिंपल कैलकुलेट। बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा आई गेस, सिंपल वे में करते हैं। 4 यहां से कट करते हैं 3 टाइम्स, एंड देन 16 यहां से कट करते हैं 2 टाइम्स, और यहां पे हो जाता है 20 टाइम्स। सो वी आर लेफ्ट हेयर विद ओनली x, सॉरी, here we are left with only x, and here is 3 into 20, so 3 into 20 is 60. So finally we have arrived, x is equal to 60. That means what? It means that 60 men will work for 16 days in 4 hours to complete this task. So 60 is the right answer. It is a previous year tier 1 exam question, SSC. Let's move on to the next question. Do it very easily, right? We'll try to do all the questions very easily. Okay, the cost of 5 kgs of apple is 450. The cost of 12 dozen mangoes is 4,320. The cost of 4 kgs of oranges is 240. What is the total cost of 8 kgs of apple? Okay, so we do one thing. We need to find 8 apples. Then we need to find 8 dozen mangoes. Plus we need to find 8 kg of orange. So 8 orange. We need to find these, right? First thing first, 5 kg of apple costing 450 rupees. And we want 8 kgs, right? So how to do that? See, if it is 5 kg for 450, that means 1 kg is for 450 by 5. That will cost you 90 rupees. So we want 8a. That means 8 kgs will cost you 8 into 9, that is 720, right? This is for the apple. So we write 720 here. Now dozens. We have 12 dozens in 4320. So 12 dozen in 4320. Now, if we multiply this, we divide this by 3 and multiply it by 2. So, here we do it like the same, 2 by 3. Why did I do that? 12 by 3 is 4, 4 into 2 is 8. So, here we go, 3 into 4, that is 8. So, in the similar way, we'll do like that. 3, so it's like 1 time, we got 13, 4 time, that is 12. 4 times, that is this one, 440. So it will be like 2880. So I put 2880 plus 8 kilograms of orange. 4 kilogram is 240. 8 kilograms multiplied by 2 here, multiplied by 2 here. So 240 into 2 is 480. Just calculate and you have done it. Very simple way I have done. 8a, we have found 8a. 8 dozen, we found 8 dozen. 8 orange, that 8 orange. So we'll do 0. We'll put a 0 over here. Then we have 8 and 8, 16 and 2. That is 18. Carry 1. 4 and 1, 5. 5 and 7, 12. 12 and 8 is 0. That is 20. 20 and 2 is 22. Sorry. So 20 ka 0 carries 2, 2 and 2 is 4. So we are here with 4080 rupees. Is there any option like this? There is one option like this. MAT 2012 question, right? But very simple way I have done. I just found what is 8a. We were given like 5 kgs, 8 kgs we found. We were given 12 dozen, we got 8 dozen. We were given 4 kilograms of orange, just double it is 8 orange, 8 kilograms of orange. Let's move on to the next question. So the quarter kg of potato costs 60 paisa. Quarter kg, what is quarter kg? Quarter kg is 250 grams.
So we have 250 grams costing 60 paisa. What will it be? 200 grams. Do one thing. 1 gram will cost how much? So 60 divide by 250. So we want 200 grams. So for 200 grams, what we do is just multiply 250 into 200. Multiply both sides with 200, right? Okay. So just cancel out 0 with 0. Now it is 5 and it is 4. So 4 into 60. That will be like 240 by 5. That is 48 paisa. So 200 grams of potato will cost you 48 paisa. Is there any option like 48 paisa in the question? Yes, it is. First option itself. So you need to do it very simple way. I just did it in a very simple way. Okay, let's move on to the other question. 28 question. The man completes 5 by 8 of the job in 10 days. At this rate, how many more days will it take him to finish the job? Right? See, 5 by 8 job. Say for example, 5 by 8 job. Take 10 days. Remaining. So, simply do 1 minus 5 by 8. So, it is like 8 minus 5 by 8 is 3 by 8. So, I need to find out 3 by 8 in how many days. That is what it is asked. So, do the simple way. First thing first. See, this is the work. This is the days. So, when you have more work, you need more days. If it is less work, you will need less days, right? So they are directly proportional. So what I do is very simple way. 10 is to x, that is we need to find out, is equivalent to 5 by 8 is to 3 by 8. 8 it gets cancelled out. So multiply this to the last one. 5x is equal to 30. Why 30? Because multiply 3 into 10 is 30. Just do it 6. So it will take 6 more days to complete this work. Is there any option like 6? 6 more days, that is. And we found it very easily. I don't think this is a big challenge for you all. Okay. आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 को. आराम से एक एक क्वेश्चन को हमें करना है. बहुत क्वेश्चन को आराम से देखते हुए करना है. मैंने कोशिश की है, आई ट्राई कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएं सो दैट आप बहुत आराम से एक एक क्वेश्चन को कर पाएं. In a dairy farm, 40 cows eat 40 bags of husk in 40 days. 40 cows, 40 bags, 40 days. Now, one cow, one bag. One cow, one bag, X days. यही करना है. सिंपल तरीका अपनाएंगे बॉस. हमें पता है 40 is to x, ये तो मुझे करना ही है. अभी इस तरफ क्या क्या है जरा बताइए. काओ बढ़ जाएंगी, दिन कम चलेंगे. काओ अगर बढ़ जाएंगी, से फॉर एग्जांपल 40 की जगह 80 काउज होती तो बहुत दिन कम हो जाते. सो इट्स लाइक 1 is to 40. उल्टा करना पड़ेगा हमें. बैग्स बढ़ जाएंगे तो दिन बढ़ जाएंगे. बैग जितने ज्यादा होंगे उतने दिन ज्यादा चलेंगे. सो इसको सीधा लेके चलते हैं. 40 is to 1, राइट? ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गए. नाउ फर्स्ट का लास्ट से मल्टीप्लीकेशन. 40 into 1 into x, that is 40x. 40 into 1 into 40. 40 into 40 into 1. So remove this 40 by 40. So x is equal to 40. Very simple manner. We could have told it earlier also without doing the calculation that if there are 40 cows and if there are 40 bags, so one cow, one bag, and this one cow, one bag is going for 40 days. So this is the question asked. One cow, one bag, how many days? Because 40 cow, 40 days. 40 cows, 40 bags, 40 days. But one cow, one bag is 40 days again. Okay. Question number 45.
We have 5 persons that can prepare admission list of 8 days working in 7 hours a day. If 2 persons join to them so as to complete the work in 4 days, how many hours they need to work, right? See, we need persons. No, we need to know how much hours. So earlier it was 7 hours a day. So I just put very simple manner, 7 hours a day, and that is X. So we need to find out what? Two things. If persons are there, hours are less. Persons are more, hours are less. Persons are less, hours are more. So 7 is X, but we'll do it the other way around. 6 is to 5. Sorry. 7 is to 5. Why 7 is to 5? Because 5 will be inversely to 7. And this 5 came from 2 person join with 5. So 5 plus 2 is 7. So 7 is to 5 is 7 is to X. One thing. Other is days. So if we do more hours a day, days will be less. So again inversely proportional. Inversely proportion means what? You have to write this again in ulta. So 8 here and 4 here. You need to be very much careful when you write this. Very simple way. अगर अभी भी नहीं समझ में आया है और आप वीडियो में अभी तक मेरे साथ में हैं, I'll let you know one more time. See, सिंपल वे में जो हमें निकालना है ना, उसको ऐसे लिख दो, भले वो x is to 7 लिखो, 7 is to x लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट जो निकालना है वो हमने राइट में रख दिया. हमें इस बार क्या निकालना था? We needed the work per day. So hours निकालने थे x, और x के सामने वही आवर जो पहले दे रखे हैं 7 आवर्स, तो यहां लिख दिया हमने. अब हमने देखा कि पर्सन का इन आवर से क्या रिश्ता है. से फॉर एग्जाम्पल कोई काम 5 घंटे में हो रहा है, लोग बढ़ा देंगे तो कम घंटों में हो जाएगा. सो इनवर्सली प्रोपोर्शन है. इनवर्सली प्रोपोर्शन का मतलब है 7 आवर्स के साथ में जितने मैन लिखे थे वी राइट ऑन द राइट साइड. व्हाई राइट साइड? बिकॉज हेयर 7 इज ऑन द लेफ्ट साइड, वी राइट इट ऑन द राइट साइड. और लोग बढ़ाने हैं, we need to add 2 more people. 2 2s 5. So the new people will be 7. Similar way, इससे अगर आपको चेक करना है, अगर आप ऐसा देखें कि आवर्स, मेरे को अगर एक 5 दिन काम करना है, अगर मैं एक दिन में 5 घंटे काम करता हूं, टाइम लगता है. 10 घंटे काम करता हूं, दिन कम हो जाते हैं. सो अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शन. सो 7 के साथ क्या लिखा हुआ था? 7 आवर्स के साथ लिखा हुआ था 8 डेज, तो हमने उल्टा यानी पीछे लिख दिया. और अगले वाले के साथ लिखा हुआ था 4 डेज, हमने इधर लिख दिया. अभी इतना करने के बाद तो एक ही काम करना है आपको. व्हाट? जो एकदम लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर है उसको राइट मोस्ट कॉर्नर से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो 7 इंटू 4 इंटू एक्स, 5 इंटू 8 इंटू 7. आई गेस हो जाएगा फटाफट से. 7 से 7 पूरा कट जाएगा, 4 से 8 ट्वाइस कट जाएगा. सो x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा. 10 आवर्स अ डे अगर काम होता है तो आपके रिक्वायर्ड डेज में पूरा हो जाएगा. दैट इज इट. सो दिस इज द वे यू डू. वेरी सिंपल अप्रोच एंड वेरी डायरेक्ट अप्रोच, नॉट टू लुक हियर एंड देयर. इधर उधर देखना ही नहीं है, सीधी अप्रोच है, सीधे क्वेश्चंस हैं. ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, और मैंने देखे एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं. मैंने सोचा कभी वर्क ले आऊं, कभी कुछ और ले आऊं, इस बार वाटर ले आए, तो हमने कोशिश की डिफरेंट क्वेश्चंस करने की. If 18 pumps can raise 2170 tons of water in 10 days, working 7 hours a day, in how many days will 16 pumps raise 1736 tons of water in 9 hours a day? So we have 4 things now, 4 things. But सबसे पहले क्या? अपने को चाहिए how many days, right? हमें days चाहिए. तो पहले उधर देखो कितने days लिखे हुए हैं, 10 days. So मैं पहला काम क्या करूंगा? 10 is to x लिख दूंगा. Why so? Because मुझे जो निकालना है ना, I always put at the right end. Now this side we have 3 things. पहले एक एक करके 18 पंप्स. अगर मैं पंप्स बढ़ा दूंगा काम जल्दी फिनिश हो जाएगा, पंप कम कर दूंगा काम लेट हो जाएगा, यानी इनवर्सली. सो अगर 10 लेफ्ट में लिखा है तो 18 राइट में लिखना पड़ेगा और 16 लेफ्ट में लिखना पड़ेगा. क्या ये बात समझ आ गई? बिकॉज 10 लेफ्ट में तो 18 राइट में होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन है.
उसके बाद आते हैं टन्स पे। सी, अगर मुझे पानी ज्यादा निकालना है, डेज ज्यादा चाहिएंगे, डेज कम कर दूंगा पानी कम हो जाएगा, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो मेरे को फिर 2170 और 1736 तो इधर ही लिखना पड़ेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं 7 आवर्स अ डे। अगर मैंने दिन में काम ज्यादा किया तो मुझे आवर्स कम लगेंगे, अगर आवर्स बढ़ा दिए तो फिर दिन कम लग जाएंगे, यानी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शन। इफ दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शन दैट मींस मुझे उल्टा लिखना पड़ेगा। सो इधर 9 लिख देंगे और उधर 7 लिख देंगे। Okay, so you know it very well. What we need to do is just multiply the left side to the rightmost side, right? Just do one thing. We'll multiply 16 into 2170 into 9 into x is equal to 18 into 1736 into 7 into 10. That is it. You need to find out this and you are done. So what we'll do is just do 9 into 2 is 18. Then we have a 7. So I think 7 will get multiplied there. 7 and we have what? 21. That is 3 times. 7 is 1 time and that is 0. So we got 310. Just cancel this 0 with this 0. Gone. Now we have got 1736. 1736. Do little bit calculation. What we'll do is just multiply this, divide this by 8. So we get 16, right? Multiply this by, divide this by 8. So we have what? 17, that is 2 times. We have got 13 now. 13 is 1 time. We have got 8. So 13 minus 8 is 5. 56. So 8 into 7 is 56. So we got 217 over here. Okay. So what we'll do is cancel this 2 by 2. So we got 31x is equal to 217. So finally x is equal to 217 by 31. Okay, so I can try one thing because 1 is at 1's place and 7 is at 1's place. So whatever it is may be multiplied by 7. So just trying out hit and trial method, 7 into 7 1 is 7 and 7 3s are 21. So it is like that. 31 into 7 is 217. Now what is left? X is equal to 7. So it will be like how many days? 7 days will be the answer. So in this way you need to do all the things very easily and simplified way. हमने बहुत आराम से एक एक चीज को किया है एक एक क्वेश्चन में। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वाले पोर्शन में जब आपको इक्वेशन बनाना है you need to be very much careful that what are the if they are directly proportional or inversely proportional. सबसे पहला काम write this and उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर लीजिए. Let's move on to the next question. Question number 63, different question altogether. Let's see what does it say. 21 binders can bind 1400 books in 15 days, right? So what we do is how many binders? So we need binders now. We have 21 is to x. Why it is 21 to x? Because 21 is the binder and we need to find more binders. We have 1400 books here, we have 15 days, we have 20 days and 800 books, right? So let's see how they are proportionate. Let's see. See, binders and books. More the binders, more the books. जितने ज़्यादा binders होंगे, उतनी ज़्यादा books होंगी. So they are directly proportionate. So I write 1400 is to 800. Okay. Then days. More the binders, less are the days. More the days, less are bounders. So inversely proportional. So I write 15 here and I write 20 here. If you see, if you can feel that, see, 15 is written with 21. So I write on the other hand, 21 is on the left side, 15 is on the right side. Why? Because they are inversely proportionate. Now just do one thing. What we need to calculate is just from the left hand side, the leftmost and the rightmost to be multiplied. So 14 into 20 into x is equal to 21 into 8 into 15. Let's see, इनमें से कुछ cancel होएगा शायद. It is 2 times, it is 3 times. This is
4 times, and this is 3 times. Anything else? 4 into 2 is 8. So x is equal to 9. Do we have 9 as option? I can see from here. It is one of the option. So 9 binders are required to bind the 800 books. So in this way, we are doing slowly, but we are doing very easy pattern. I just want to know कितना simple करवा दिया है मैंने आपके लिए. चलो, last question of the video. MBA 2006 का question है. A garrison of 500 men had provisions of 27 days. After 3 days, so now we have 3 days left. 3 days are gone. So 27 minus 3, 24 days are left. A reinforcement of 300 men arrived. For how many more days will be remaining food last now? Right? See, what we need is how many more days. Here we have 27 minus 3. 24 is 2x, right? 24 is 2x because whatever has been eaten. Remaining are 24 days. अब तो सिर्फ 24 दिन रह गए हैं. तो 24 days में क्या होगा वो देखना है आपने को. Now this side we have people. So more people, less days, because if there are more people, they'll eat more. It will for the lesser days. So we'll do the reverse one, inverse one. So 24 के साथ है 500. So we'll write over here and we'll multiply it with the we'll do with 300 more. So 300 plus 500 is 800. So we get all zeros gone. Multiply the leftmost to the rightmost, that is 8x is equal to 24. So 8x, and you multiply 24 into 5, that is 5 here. We have got x is equal to 24 into 5 by 3. So by 8. So 8 is 3, that is 15. So 15 more days and the food is gone. And here we go. So finally we have arrived to the end of this video also. एक एक करके बहुत सारे वीडियोस आप लोग देख रहे हैं इस बुक के. एंड आई टेल यू मैन, व्हाट जो ये बुक है ना, दैट इज द मिरेकुलस बुक. आप अगर इस बुक को कंप्लीटली फॉलो करते हैं, अच्छे से फॉलो करते हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम जो आप देना चाहते हैं उसे मिस नहीं कर सकते. बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, बहुत ही अथॉरिटेटिव बुक है. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए इस तरह की बुक कंट्री में बहुत मुश्किल है, इस लेवल की मोस्ट अपडेटेड बुक, राइट? सो यू नीड टू डू व्हाट थिंग. पहले तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नए नए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे. दूसरा, अभी के अभी शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, बताइए कि बहुत अच्छे वीडियोस हैं. तीसरा बॉस, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, मैंने क्वेश्चंस करवा दिए चेन रूल के रिमेनिंग सारे क्वेश्चन कर डालिए एंड यू आर थ्रू. यही हम चाहते हैं, यही आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको सक्सेस मिले. अगले वीडियो के लिए अगले QR कोड को स्कैन करें. थैंक यू एंड टेक केयर.